stock market is a slave of earnings. That's it. Tariff की बात कर लेते हैं. Hot topic है. I personally feel if it remains, India will change for the better. And sometimes there's nothing better than having national pride at stake. What people also need to realize is India is one of the few large global markets. In India today, the underlying index has 22 sectors. That's large. And I've never differentiated, Vivek, between a 1,000 rupee investor and a 100 crore investor. For example, the government has focused a lot on changing the history books. You have seen chapters changing. वो भी बोल रहे कि मुगल एम्पायर 2 साल जो सिखाते थे वो रिप्लेस कर दिए हैं मराठा एम्पायर का, या जो भी आप बोले. मेरे हिसाब से 12-13 साल की उम्र से फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी टेक्स्ट बुक में होनी ही चाहिए. एक दूसरा बड़ा मिसकंसेप्शन है कि म्यूचुअल फंड इक्विटी है. वो हमको वी नीड टू ब्रेक दैट. सिंपल है कि इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है. आज एक अपने बहुत ही पुराने मित्र से मिल रहा हूं जिन्होंने हमेशा अवॉइड किया है मेरे को, और मेरे को ही नहीं, पूरी मेरी बिरादरी को. चुपचाप रहते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत रिस्पेक्ट है उनकी. कई जगहों में काम किया, लेकिन पिछले 18 साल से एक म्यूचुअल फंड हाउस को बढ़ाते जा रहे हैं. बात कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं. सौरभ नानावती, जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के और कंट्री मैनेजर भी. बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ. थैंक यू विवेक. पहली बात तो ये बताइए कि इतने साल आप क्यों मुझे इग्नोर करते हैं? मीडिया से क्या परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं है. Yeah, I mean, personally, I just try and remain under the radar. क्यों? Nothing of that sort, just a personal choice. अच्छा नहीं लगता, मतलब ज्यादा इतने काम में व्यस्त रहते हैं. Yeah, मतलब lots of things to do and at times it's just better to. डायरेक्टली आप इन्वेस्टर्स से बात करना प्रेफर करते हैं? Yes. क्योंकि ये मुझे मालूम है, आप बहुत इन्वेस्टर कैंप्स में जाते हैं, वहां बातें करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स से. And I've never differentiated, Vivek, between a 1,000 rupee investor and a 100 crore investor. So even if a 1,000 rupee investor calls me, I speak with them. So that's a principle. As long as you're a client, you do have access. बिहेवियरली, क्योंकि आपने इतने निवेशकों से पर्सनली भी बातचीत की, आपके खुद फंड में इतने निवेशक हैं जिनके आप बिहेवियर पैटर्न्स देखते रहते हैं. ये जो डिज़ायर है कि मुझे हर बार कुछ हो तो एक्ट करना है, मुझे इधर से निकल के उधर जाना है तभी मेरे पैसे बनेंगे. ऐसा बिहेवियर आप, क्योंकि आपने विदेश में भी काम किया है और आपका पूरा करियर इनफैक्ट अधिकतर जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं Yes. उनके साथ रहा, तो जो एक लर्निंग डेवलप्ड मार्केट्स की है वो आप देख चुके हैं फर्स्ट हैंड. क्या ये साइकिल ऐसे सब जगह चलता है? क्योंकि मैं आज भी देखता हूं, मैं देखो आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, बहुत कम देते हैं आप, लेकिन 2016 में आपने कहा था कि स्टॉक मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स. Yes. ऑल ग्लोबल मैक्रो कंसर्न्स आर रियल and India is interconnected with world markets. It's not possible that if some big global event happens, India will remain unaffected. But one has to remember that the stock market is a slave of earnings, and if corporate earnings turn around, Indian markets will start rallying again. ये आपने 9 साल पहले कहा. And इत्तेफाकन आज भी वही सिचुएशन में हम. It's a very similar situation. और अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं, आपका आंसर भी वही होगा. No, I stand by it. I think quite a few points, which you have come out with here. Stock market is a slave of earnings. That's it. I mean, over a long period of time, there will be many events which will occur, but it is fundamentally a discounted cash flow of
future earnings, and you're making that calculation. So a good business which will stand the test of time and run over 10, 20, 30 years will give you phenomenal returns. And equally, a bad business which is more focused on, an event or a gray area, hypothetically in regulations, or, वो जुगाड़ के लिए बना है in Indian language, you have to challenge it, and chances are there will be a higher failure rate in those kind of businesses. What people also need to realize is India is one of the few large global markets. There are very few. I would perhaps say there may be only 5 global markets which can qualify in this bucket. So which are these markets? US, China, Germany and Japan, and now India, where you basically have so many industries, so many sectors to play around in. Look, I'm not even naming countries like Russia and Brazil. Why? Because those are more dependent on energy, everything. In India today, the underlying index has 22 sectors. That's large. 22 sector hai, आपका सबसे highest percentage, maybe 30+% financial services, then IT, then manufacturing, chemicals, FMCG. आपके पास इतने सारे options है, which then gives fund managers an option to play around and generate that alpha for you. It becomes very difficult in a market where hypothetically 70% is only dependent on, minerals or oil or this thing, because then it will basically behave in that direction. So from a macro perspective, I think these 5 markets, if you play it smartly, you will make your meaningful returns with a good fund manager. In most of the other places, it's more a cyclical macro call that and they don't have adequate size. So I think the good thing about India is in the last 4-5 years, it has matured dramatically in terms of number of new issuances, number of new companies coming in, market depth increasing. Long way to go, but I think it's a very different situation from where it was, say, 5 years back. So, look, remain focused on earnings. Honestly speaking, last 30 years, I yet spend most of my Saturdays and Sundays looking at balance sheets of the top 200 companies. ये करते हैं अभी भी weekend करता हूँ में? मैं. Yes, I like it personally. So I have the numbers most of the time at the tip of my fingers, and I like to just this thing, and you just watch it. And at this point of time, the last few years, I've been also doing it for the US markets. Both my sons are now studying there. They started working. One of them started working there. So just out of interest, when they saying I've started doing it even for the US markets. So I think I stand by it that it is a slave of earnings, and that's what I think what we are seeing right now. Last 1 year, you may say that returns have not been there. It's a flat market, right, at this point of time. And what has happened? Fundamentally, you had 2021 affected by COVID. Everything spilled over to 22-23. So 22-23 were great years. And then people started thinking that you have to take your chart from 22-23 and take it forward. It doesn't work that way. It's averages. You need to go back 2015. And if you normalize it, what has happened this year is earnings have been weak. And therefore the markets have not performed then. Because we were I think perhaps taking the wrong base of a high growth of 22-23, which was more an overflow from 2021. So you just have to be careful in these kind of things. Having said that, market is flat. I think in our stable we have a few funds which have delivered 10-15% returns yet on a 1-year basis.
So is there an opportunity for us to outperform and make good returns for the investor? Yes, there is. That's because of the width and the breadth of the Indian market and how it is structured. So I think, look, India is in a sweet spot. Very long way to go. But it is again what I'm seeing globally is large institutional investors earlier had buckets. So the bucket was emerging markets. तो उसमें हमारा एक छोटा सा एक हिस्सा छोटा होता सा था, पर वो छोटा भी अभी काफी बड़ा हो गया है. बहुत उसमें भी बदलाव आया है. पर अभी क्या लोग बोलने लगे हैं कि बस ये इमर्जिंग मार्केट नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें 25 कंट्री है और अगर ये परफॉर्म करेंगे दूसरा कुछ ले जाएगा. तो इंक्रीजिंगली अभी इन्वेस्टर बोल रहा है कि मेरे को चाइना का सेपरेट मैंडेट चाहिए, मेरे को इंडिया का सेपरेट मैंडेट चाहिए, क्योंकि ये मार्केट अपने आप में इतनी बड़ी है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि अगर मैं वो टैप ना करूँ तो मेरा लॉस है. तो द सिंपलेस्ट वे कि मैं इंडिया ETF में डाल दूँ, देन आई जस्ट गेट माई बीटा. बट देयर इज़ रियलाइजेशन कि अगर ग्राउंड लेवल पे कोई अच्छा फंड मैनेजर है जो समझ सकता है और जो मेरे को नेक्स्ट 10-20 साल लेके जा सकता है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमाऊँगा. और मेरे को ये दिख रहा है. When I go, they're saying, I visit many countries every year. I can clearly see that change in investors and their understanding that, look, US, China are in another level, but in the next 3, then India is catching up there meaningfully. And that's the opportunity. और आपका तो ग्लोबल फंड हाउस है, तो अगर आप ये कह रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड आपकी ये नॉलेज है कि वहाँ से जब आप बात करते हैं अपने कॉलीग से ग्लोबल, लास्ट 2 साल में बहुत बदलाव आ गया. इंटरेस्ट बढ़ा है इंडिया में. इंटरेस्ट एंड ऑल्सो रियलाइजेशन कि ये खेलना है. ये मार्केट 20 साल जाएगा. ठीक है, देखिए आपका ग्रोथ, honestly speaking, we are in such a sweet spot that if you don't do anything at all, I mean, honestly, you don't take any decisions, I think this market will structurally yet grow at 6%, which itself is huge. अगर उसमें थोड़ी, good policies, थोड़ा forward thinking आ जाए, and if you can take that up to 6.5, 7, you will have a great outcome. And that's what we should aim for as a country, that let's open it up. If we can take that 6 to 8, plus you don't have a better situation than that. ये जो अर्निंग्स हैं जो आपने कहा कि और फैक्ट हैं जो अब आ रही हैं, थोड़ी वीक सी आई हैं, इनमें क्या आप टर्न अराउंड देखते हैं आपके फंड मैनेजर्स जब आप उनसे बात करते हैं कि ये अर्निंग्स जो इतनी क्रिटिकल चीज़ है, बाकी नॉइज़ है, चलिए टैरिफ टूरिफ होते रहेंगे जो भी करते हैं, लेकिन ये कुछ आप मानते हैं कि टर्न अराउंड इनमें दिखने लगेगा 2-3 क्वार्टर्स में या 1-2 क्वार्टर्स में? टैरिफ की बात कर लेते हैं. हॉट टॉपिक है जी. Whatever has happened, right? In terms of, we know the announcements. I personally feel if it remains, India will change for the better. Sometimes these tough situations bring the best out of you. And sometimes there's nothing better than having national pride at stake. It just gets people together. It gets organizations together. It gets the masses together. So, maybe abhi hit aayega, but I think it will do the right things. And again, I'm telling you from an example of China, where they have been preparing for this for the last 5-6 years. Last 5-6 years, the way they have clamped down, and they have just sort of decided that we want to be independent on our own. And they have shown it at this point of time. I mean, US's yesterday of delaying clearly shows that, they hold the power rather than US holding the power on them in that sense, according to me. And it's an independent country. We need to get there. It's a lesson for us. We need to get there at times. Get there on your own merit and your own strength. I think on the earnings part, again,
as I said, cyclicality. If you have good leaders, they will understand, they will change accordingly, they will focus on the right things, and it will come back. So my sense is next 2 quarters perhaps will be weak, but hopefully after that again, the growth should start coming back. And to that extent, I don't think the market is maybe outrageously priced. Thoda महंगा है, but it's not outrageous as we have seen in the past, because for whatever said and done, the growth in the mid cap, small cap companies has been there. So increasingly, जो exactly 10 साल पहले मैं 50 कंपनियां ज्यादातर देखता था कि ये लोग ये अफेक्ट करेगी बाजार को, अभी वो पूरा लिस्ट बढ़ के 250 बन गए हैं, क्योंकि ये कंपनीज relevant है. I don't know, there was this whole WhatsApp floating around that if you think about it, the number of billion-dollar companies, we are third. It's US having 1,700 companies, billion-dollar market cap. Japan number 2, 400. India number 3, over 350 billion-dollar companies. China is lower than us. So I think that relevance, that size, all those things are coming in. And Indian market is complex. It's like you can say 30 markets in one. अगर आप बराबर समझ सकते हैं कि क्या किधर चल रहा है, it gives you opportunities to make money for investors. एक और जो डेटा हमेशा चिंतित करता रहता है सौरभ, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा और बहुत इस पे काम किया, एजुकेट किया लोगों को कि वेल्थ जो है खासकर इक्विटी में लॉन्ग टर्म में बनती, और हालांकि कल एक डेटा पॉइंट देख रहा था, मुझे मालूम नहीं कि सही है कि नहीं, आप बता सकते हैं, लेकिन कि 2020 में केवल 5% इन्वेस्टर्स थे जो 5 साल तक रुकते थे. Yes. अब वो नंबर लगभग 30% हो गया. Absolutely. तो अच्छी बात यह है कि 5 से 30 हुए, लेकिन आज भी 70% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स 5 साल तक भी नहीं रहते. ये भी फैक्ट है. 100%. तो वेल्थ इन अ वे जो बननी चाहिए, अब ठीक है, उसमें कई लोग, जब मैं ये सवाल पूछता हूँ, कहते हैं कि उनको वो फंड ठीक नहीं लगा, वो किसी और फंड में चले गए. अब ये तो कोई नहीं जानता मतलब, लेकिन फैक्ट है कि अगर आप 2 साल 3 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो उसमें आप जो आपने कहा कि एक मीनिंगफुल चेंज आपकी लाइफ में नहीं आ सकता. विवेक, ये भी बदलेगा. I think over a period of time, as we see investors getting more and more matured and educated, they will realize this. I think the best investors, at least in the Indian markets, have been the guys who have actually forgotten their money. पैसा पड़ा रहा है 10 साल तक, and suddenly when they open their folio and they see, oh wow, this has become 6x. So I just had an aunt last week who basically said, Saurabh, I don't remember 2013-14 में तेरे फंड में डाला था, है कि नहीं पैसा? So I asked my customer service to take out her folio and I sent it to her. And it was exactly 11 years, 2014, when she had put it. And the fund has grown exactly 6.5x. And she was so happy. She said that, look, I couldn't have thought about it in this fashion. And it's not even like a mid and small cap fund. It's a normal, my flagship contra fund where she's put in that money. So I think a lot of people who have put in for the long term, and when they've forgotten about it, they have made far more money at times than people perhaps who have kept on churning it every 2-3 years. Because then you are only chasing the winners, and you never know that the winner of last year may not be the winner for the future. In that sense, you are chasing winners. You may be changing your financial advisor on a continuous basis. So a new financial advisor comes, he takes you on a different path, and those are, I think, mistakes which perhaps investors are making. But increasingly, I think they are understanding this. So I think the big change from a behavioral perspective, which I'm clearly seeing, is most of the SIP signees the last few years
now are coming for the 10-year period or just keep it on perpetually. So that change is coming. आपका एक बड़ा base है पास का, इसलिए ये number what you were saying is right, but वो भी change हो रहा है, and it's a good change. It's a change for the better. So I think it will play out. I don't have any doubts on that. अब वेल्थ क्योंकि बन रही है, अब जैसे आपने कहा, अगर 3.5 कल ही पढ़ रहा था कि एक कंपनी ने ईसॉप दिए 400 करोड़ के, 400 लोगों को, तो सबको 1-1 करोड़ तो वैसे ही आ गए। तो आज जो करोड़पति क्लब है वो बढ़ते जा रहा है, वेल्थ बढ़ रही है लोगों की थ्रू वेरियस रीजंस। तो वो देखते हुए कई नई नई कैटेगरीज भी आ रही हैं। पहले तो कि भाई अगर आप बहुत रिच हैं तो प्राइवेट बैंकिंग होगी आपके लिए, आप HNI हैं, आप UNH हैं। अब आजकल जो पूल ऑफ रिच कहें या जो भी कहें, अगर 1 करोड़ रिच तो है ही हमारे देश में, सुपर रिच है, तो अब नई नई चीजें भी आ रही हैं। AIF आ गए, ऑल्टरनेट्स, फिर अब जैसे सेबी ने कहा है कि सिफ करके कैटेगरी क्रिएट कर दी, फिर आपके वो हैं PMS स्कीम्स, तो पहले से ही थे बट एक लेवल के लोगों के लिए थे जो तब शायद बहुत कम लोग इस्तेमाल कर पाते थे। तो अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं और दूसरे पे आऊंगा मैं, वहां पर आप किस तरह की प्रोग्रेस देख रहे हैं? पहले तो एक सजेशन है, we also have been taking it up with SEBI, but the faster we realize, for example, the government has focused a lot on changing the history books. You have seen chapters changing, के वो भी बोल रहे कि मुगल एम्पायर 2 साल जो सिखाते थे वो अभी रिप्लेस कर दिए हैं मराठा एम्पायर का, या जो भी आप बोले। एक कोर चीज़ जो अभी भी नहीं कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 12-13 साल की उम्र से फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी टेक्स्ट बुक में होनी ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब वो इतना एक बड़ा वॉइड है। I come from a doctor's family. When I basically this thing, meet so many doctors, they have never been taught financial planning. Unfortunately, they have no idea. And even at the age of 40-50, when they start making money, they have a tough period. बहुत पढ़ाई, बाद में वो struggle to set up, and then they say, but then they come out with such trivial questions at times. You feel sorry for them. That look, where did we go wrong? And I think it's just important that the faster we improve the financial literacy, the better. Now, as a flip side to that, I think what has happened is the new digital platforms have come, and in a way, perhaps they may have taken the role of educating and things. So clearly, at this point of time, last 1-2 years, and I think this trend will accelerate, is earlier हमारे industry में वो 40 साल के ऊपर के लोग आते थे, क्योंकि एक लेवल पैसा बना, फिर बाद में हम म्यूचुअल फंड लास्ट बकेट है। बिल्कुल, मेरे को अभी नहीं डालना है, पहले मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है, बैंक FD में डालना है, गोल्ड लेना है। म्यूचुअल फंड मतलब 5वें-6ठे स्थान पर था। अभी लोगों को समझ आ रहा है कि मैं म्यूचुअल फंड में पहले दिन से आ सकता हूँ, पहली बात। एक दूसरा बड़ा मिसकंसेप्शन है कि म्यूचुअल फंड इक्विटी है। वो हमको we need to break that. It's not equity, it's all asset classes. Correct. आप गोल्ड में भी डाल सकते हो, डेट में डाल सकते हो, इक्विटी में डाल सकते हो, प्रॉपर्टी फंड्स भी आए हैं, AIF में आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी डाल सकते हैं। तो अभी सारी बकेट्स बनती जा रही है। तो म्यूचुअल फंड्स इज नॉट ओनली अबाउट, और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट इक्विटी, it's about all asset classes. And because it is accessible, low ticket size, transparent, it allows you to participate from day one. So that whole myth also is getting broken. So again, you will see the numbers, they're going up significantly. That 18-year-old also is starting off, पहली जॉब से ही लगाना चालू कर देता है कि सभी मेरे को 1,000 रुपया सिप में डालना है महीने का, and other things. So I think a lot of those changes are real, and that tailwind is there for this industry, and we are benefiting out of it. But I think a lot has changed in the last 5 years.
according to me, at an industry level. As I said, पहले वो ढांचा हम 40 and above के ऊपर देखते थे, अभी सब यंग देख रहे हैं. एज ग्रुप तो कम हो गया. एकदम कम हो गया है. लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी आ रही है, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है. अगर ये टेक्स्ट बुक में डाल दे, और हर एक के टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, क्योंकि भले आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, आपको अपने पैसे संभालने नहीं आएंगे तो आपको अपने करियर में और मेहनत करनी पड़ेगी in that sense. So I think that's a crying need. I think we should introduce it. The faster we can do it, the better. And I think that's the big change which I think I see in the global countries where financial literacy is much, much higher. And therefore they start early. And therefore they can then think of retiring early or enjoying the fruits of that investment early. एक और जो बड़ी डिबेट चलती रहती है, और अगेन बिकॉज यू हैव वर्कड एंड कंटिन्यू टू वर्क विद अ ग्लोबल फंड एंड सी द वर्ल्ड फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, वो है पैसिव वर्सेस एक्टिव. Yes. अब कुछ लोग कहते हैं कि विदेश में जो अधिकतर मनी है वो पैसिव में रहता है. भारत का जो मैं भी आपसे सुन रहा हूं कि जो हम जिस कर्व पे आज हैं वहां पर एक्टिव का रोल मेरे मुताबिक थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यूनिवर्स एक अभी उतना नहीं है कि 10,000 20,000 कंपनियां हैं तो चलिए सब ही खरीद लीजिए. आपकी इस पे क्या राय है, पैसिव वर्सेस एक्टिव? No, so I think a very clear trend in the global markets, और हम तो देखते हैं क्योंकि globally Invesco is a $2 trillion asset manager. And we also are the 4th largest passive fund manager in the world. तो हमारा 2 trillion में से करीब 600 billion passive में. So we see both the sides. And if you basically see the data for the last 3 years in the US markets, I think it's clearly going from active to passive. क्योंकि उधर उतना अल्फा जनरेट नहीं हो रहा है जितना सोच सकते हैं this thing, and therefore it makes sense for you to play the ETF game and the passive game. अभी उसमें एक नई चीज उधर वो आ रही है कि पैसिव में भी कस्टमाइज करके ये मैग्निफिसेंट 7 का पैसिव है. तो ऐसा नहीं है कि पूरा इंडेक्स का है. मैं उसमें चुने हुए बास्केट खरीद रहा हूँ, छोटे छोटे बना रहा हूँ. इफेक्टिवली देन यू आर इन अ वे प्लेइंग द एक्टिव गेम. करेक्ट. मे बी इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ वे. So look, I think from an Indian standpoint also, you look at the Indian data, right now I think it's moved 20% to passive at an aggregate level. तो 75 लाख करोड़ में से 12-13 लाख करोड़ पैसिव में आ गए हैं आपके. दूसरी बात ये है, मे भी उसमें 50% पैसा अभी भी EPFO का है. तो अगर वो निकाल दे तो मे भी 10% है, पर बढ़त हो रही है. I think, look, as an investor, you need to plan for both, whatever you're comfortable with. ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो सबसे बड़े बड़े ग्लोब के इन्वेस्टर होते हैं, जिसके पास खुद के 500 बिलियन होते हैं, वो लोग में एक एकदम क्लियर ट्रेंड दिखा है कि पहले वो लोग 10 साल पहले सपोजिंग पूरा पैसा एक्टिव में रखते थे. फिर उन्होंने रियलाइज किया कि बस आधे जन अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आधे जन, तो फिर मेरा नेट रिजल्ट तो सेम निकल रहा है. तो वो लोग ने अपनी प्रोसेस शार्पन करके अभी क्या कर रहे हैं कि दे कीप 50% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन पैसिव because they need to play the market, but then the remaining 50 they gift the best guys. So then it starts becoming a pick and choose game. कि ठीक है, मेरा ये 50% पैसिव में है, जो मार्केट देगा उससे मैं कम फीस पे उतना मेरे को मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा मेरे को. अल्फा के लिए मेरे को सबसे हाईएस्ट लोग के पास, अच्छे लोगों के पास जाना है. And therefore, you then start seeing huge differentiation where the winners take it all. अपने बाजार में भी शायद वही हो रहा है at times. You know, you will see disproportionate flows going to funds which are performing well at times, in a way, and you know, many others will fall along the wayside. So I think it will play out in India also at some point of time.
Having said that, I think where our market is, it's some way to go when that trend will catch more steam. अभी भी मेरे हिसाब से एक्टिव में 10-15 साल बाकी है. सौरभ, अगर पिछले 25-30 साल, अब कई स्कीम्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स की 30 इयर्स भी सेलिब्रेट कर रही हैं, और कई स्कीम्स अक्रॉस फंड हाउसेस, उनके अगर आप आंकड़े देखें तो 21% कंपाउंडेड रिटर्न ओवर दिस पीरियड, 22%, 23%, 100x. Absolutely. और कई भारतवासियों ने, मोस्ट भारतवासियों ने इसका कोई फायदा नहीं उठाया, राइट, बिकॉज ऑफ द रीजंस यू जस्ट सेड. आज के जो यंग बच्चे हैं 20, 21, 22 साल के, जेनजी जिन्हें हम कह रहे हैं, ज्यादा अवेयर हैं. हालांकि अभी भी टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ा, लेकिन आज चलिए उनके हाथ में फोन है, जानते हैं, रिसर्च कर सकते हैं. क्या आप मानते हैं कि अगले 20 साल, क्योंकि आपने 2-3 बार 20 इयर्स, 25 इयर्स बोला कि अभी टेलविंड है, आज अगर वो निवेश करें और अगले 20-25 साल तक करें, तो मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं कह रहा, नहीं तो मैंने कहा कुछ स्कीम्स थी 18 भी हो सकता है, बट ये बहुत बड़े नंबर है. 18-20% कंपाउंडिंग, इट्स ह्यूज, एब्सोल्युटली ह्यूज. तो कहीं कोई मतलब विदेश में आप किसी को कहेंगे तो कहेंगे भाई हम तो कल चेक ले लीजिए. ये आप मानते हैं कि अच्छे रिटर्न, चलिए नंबर तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जिस जिस तरह से आपने समझाया, भारत की इकोनॉमी, हमारे खुद का जो टेलविंड्स हमारे हैं, आज भी वो बस मिस नहीं हुई है. अगर आज भी आप कर लें, 20-25 साल बाद आप अच्छी खासी रकम पर बैठ सकते हैं. So Vivek, to your question, the 18 to 21% CAGR is there. It's there in a lot of funds. What you just need to also keep in mind is वो time पे आपका inflation 6-7-8% था for the majority of the period. This inflation number has come down only the last 2-3 years. So on a relative basis, you were making 18 to 21 minus say 7-8% inflation. I think that number will now come down to a more realistic 12 to 15%, which itself is huge. Yeah, it's absolutely huge if it compounds at that level. Anybody in the global markets, you tell them 10% and above, we will just give you. So from an India perspective, 12 to 15 is huge with a 3%, 4% inflation handle. So net you do make that kind of alpha in that sense, and therefore your wealth grows. So no, I think it will happen. That's my belief. It will definitely happen. Whoever gets in early and plays it out, and he's just structured about his expectations in the right manner, they will benefit. Signs of it. My son just came back from the US holiday, first year engineering कर रहा है उधर. 2 of his friends basically called him up and said, just ask your dad कौन से fund में SIP करूँ. And I was surprised. They are not earning right now. They are studying. But if that kind of question is coming to me, I like it. Of course. And it's anecdotal evidence that these guys are going, they are understanding, they are looking it up, or their curriculum there has taught them this, and they want to get into it early. It's a refreshing change, and I think it's happening. If we can expedite it either through our initiatives like these, or as I said, just get it in your textbooks. When he's 12, 13, he should learn this. Nothing like it. I was taught about the equity markets by my dad, who's a doctor. He would just invest in the IPOs in those days. जो भी IPO आया, फॉर्म भर के डाल दो. मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में था, तो उन्होंने मेरे को बिठा के बोला 8 फॉर्म भर. क्योंकि वो टाइम पे कॉम्बिनेशंस होते थे ना. हाँ, बिल्कुल. लॉटरी. हाँ, तो फिर एक में सौरभ पहला नाम, मॉम दूसरा नाम, दूसरे पे बॉम, जैसे तो 8 फॉर्म भर के जैसे. एंड दैट्स वेयर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग फॉर्म भर के फिर मेरे को इंटरेस्ट बढ़ा कि ये क्या है.
और इसका मेरे को समझना है थोड़ा क्या अंदर तो फिर आपने कभी वापस मुड़ के ही नहीं देखा? ऐसी बात नहीं है। मतलब आपका मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्यों? वो लोग बोलते हैं कि वो 3 इडियट्स में वो सुहास था ना, वो आप वो है इंजीनियर बन के आप MBA फाइनेंस किए नहीं, पर ये तो नेचुरल प्रोग्रेशन था ना उस वक्त हमारी जनरेशन। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई टेल देम कि वो टाइम की मेरी नीड अलग थी। नहीं, और एक नेचुरल प्रोग्रेशन भी था। आप इंजीनियरिंग करें, फिर आप जाके MBA करें। आज इनफैक्ट पढ़ रहा था मैं पेपर में सुबह कि पहली बार, हाँ, I saw that article. देखा आपने? 50% the pluses in IIMs अब सिर्फ इंजीनियर्स नहीं जा रहे, तो उस वक्त it was a different it was more situational at that point of time. और तब तो या तो आप इंजीनियर बनते या डॉक्टर बनते। आपके केस में आप इंजीनियर बन गए, पेरेंट्स खुश हो गए होंगे, है ना, कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए, चलिए कोई नहीं, आप इंजीनियर बन गए। लेकिन आज आई थिंक द जनरेशन इज फार मोर, दे थिंक वेरी डिफरेंटली। Agreed. लेकिन सौरभ, आपकी जो जर्नी रही, और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं और बहुत लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो बहुत इज्जत करते हैं आपके काम की, और आज हम बैठे हैं और आज के ही अखबार में 75 लाख करोड़ का AUM क्रॉस हो गया इस इंडस्ट्री की। Yes. और 28,000 करोड़ पर मंथ अब SIP आ रही है। Absolutely. तो आपने तो एक बहुत ही डिफरेंट दौर देखा है जब लेट 90s में आप इस सेक्टर से जुड़े। Yes. तो ये जो बढ़त आई है, एक तो डेटा में दिख ही रहा है कि लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या इन्वेस्टर के बिहेवियर में भी बदलाव आया आपके मुताबिक? बहुत बदलाव आया। I started my journey in the mutual fund industry in 2002 when Deutsche Asset Management was setting up shop in India. And I was the first employee in this company in 2007, 1st October 2007, when I joined to set up this from scratch. I think we really had a phase, I would say till around 2019-20, where you actually had to go and sell the product. And, chances are 1 out of 10 people would get convinced. But I think the good thing about the fund industry is it's built on fairly strong fundamentals. Regulations have been extremely tight from day one, maybe ahead of the curve, despite its small size. And we then started seeing a sea change where right now the investor is accepting the mutual fund product as a core product. So if I look at the last 4-5 years, the discussions is not about why mutual funds, but which mutual fund, कौन सी कैटेगरी में डाले, equity, debt, hybrid, किस में डाले। अभी वो म्यूचुअल फंड को बेचने का वो काफी कम हो गया है समय। Why mutual funds? कौन से म्यूचुअल फंड में डालना is the question which I'm answering, and that's if I step back, over this 20-year journey, the last 5 years, that's been the big difference. So look, Vivek, I think this 75 lakh crore is, I would say, shouldn't focus on that. I would like to be now more critical of the data. And my critique part in a way is that we are nowhere. We have around 5 crore unique clients. I think of the 5 crore, maybe 1.5-2 crore maybe clients who have under 100 rupees in the folio. Account खुल गया है पर अभी तक पैसे नहीं आए हैं। तो मीनिंगफुल पैसा आपका रहेगा वो अभी भी करीब 3 करोड़ इन्वेस्टर है। ये 3 करोड़ नेक्स्ट 20 साल में 25-30 करोड़ पहुंच सकता है मेरे हिसाब से। एक सिमिलर जर्नी मैं चाइना में देख चुका हूँ, मैंने उधर काम भी किया है। इन्वेस्को भी बहुत बड़ा फंड है उधर, और उधर ऑलरेडी है उतने इन्वेस्टर्स, और उनका मिडिल क्लास इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड, राइट।
and they do invest in mutual funds. Can that repeat here in India? We should see that repeating. So my thought process, my sort of looking forward from this would be that can we make this 3 crore investors into 30 crores in the next, say, 15, 20 years? That should be our aim. AUM is an outcome. I never look at the AUM part of it because the investor should be happy where he wants to put in. It should be his choice. अगर वो डेट में भी डालता है ठीक है, इक्विटी में डालता है ठीक है, लिक्विड फंड में डालता है ठीक है, जिधर भी डालता है वो उसकी चॉइस होनी चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र ने उनको क्या गाइड किया है उसके हिसाब से होना चाहिए. हमारा काम है कि उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे, जिधर आ रहे जो उनका एक्सपेक्टेशन है वो मीट कर जाए. आई थिंक दैट्स द बेस्ट आउटकम फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. क्या आपको लगता है कि हमने इतने अच्छे सक्सेस की बात की कि एक जगह जहां हम शायद अभी भी उतने अवेकन नहीं हुए एज अ कंट्री, कि अगर जैसे आपने शुरू में कहा 1000 रुपए वाले से भी आप बात करते हैं और भारत वहां पर है, एडवाइजर्स आज आप देखिए देश में मुश्किल से 1 लाख भी नहीं होंगे. आपने जब करियर शुरू किया था तो वो एमफी में जो रजिस्ट्रेशन होती थी तब 2.5-3 लाख की होती थी. तो बढ़ने की बजाय, मैं क्वालिटी पे जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सीधा नंबर भी अगर कहूं कि 140 करोड़ के देश में 1 लाख भी एडवाइजर नहीं है, और तो इस 1000 रुपए वाले की बच्ची को हम किस तरह से सर्विस करेंगे? Agreed. क्योंकि आप एमफी के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं और ये इंडस्ट्री बहुत स्ट्रक्चर्ड है, रेगुलेटरीली जैसे आपने कहा बहुत एडवांस्ड है कंपेयर टू अदर वर्ल्ड्स. क्योंकि जो आपके वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां हैं ये सब तो वो मतलब जो रिच लोग हैं उनको सर्विस कर रहे हैं. लेकिन वो 1000 रुपए वाले इंसान का हाथ पकड़कर उसे सही दिशा में लेके जाने का काम कैसे होगा सिर्फ 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर के साथ? विवेक, इसमें 2 चीज़ है. योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट. अंडर पेनेट्रेटेड लोग नहीं है आपको हैंड होल्ड करने के लिए और वो आपको समझाने के लिए सही पाथ क्या है, आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं. But there's another aspect to it which you need to understand from an Indian market perspective. Indian market is slightly unique. And it's unique across all the businesses at times also. So it is not like the global market. What is the big difference? In India, I own the client directly also. So the mutual fund and the investor, the relationship is between you and me. You may have a distributor in between, but fundamentally, I have your full data, right? And that's where you have in India a distributor plan and a direct plan. उन्होंने वो किया ही है कि आप वो देखें. ग्लोबली क्या होता है कि हम से 1000 बैंक के साथ डील करेंगे तो वो सिटी बैंक उधर बोलेगा कि हमको ये 5 फंड ठीक लग रहे हैं, हम हमारे 1000 क्लाइंट का पैसा कंसोलिडेट करके मूव कर रहे हैं और वो आपके फंड को आप जानते तक नहीं, हम जानते नहीं रहेंगे. हमारे उसमें सिटी बैंक दिखेगा as somebody who's consolidated it as a bank and has put in the money. There is no direct plan per se कि वो मैं सीधा उसके पास चले जाऊं इन अ वे. तो एक्चुअली, और ये मैं खाली फाइनेंशियल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखो अभी सब चीज में है. आपका यूपीआई क्या है एट द एंड ऑफ द डे? यू आर बेसिकली पेइंग हिम ऑन द स्पॉट, राइट? Through this thing, it is going from your account to his account. So in a way, thoda, I mean, there's no right or wrong, but there's a structural element here. I mean, you look at your Zomato or a Swiggy, what are you doing again? Or a big basket or a this thing. You are again having this thing.
So India, at times, it's very structural because of regulations and the way it is saying that it is a B2C and it's a B2B2C. Globally, you tend to be B2B2C in all businesses. But in India, they basically say that, look, to take out that doubt in between, we want you to get direct access in everything. It's not only in this thing. So, अभी आप देखिए दूसरे भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स में वही हो रहा है. इंश्योरेंस आप जाओगे एडवाइजर के थ्रू तो अलग है, आप ऑनलाइन जाओगे तो प्लान अलग है. अभी आप कॉम्पनसेट करना, आप गाड़ी लेने जाते थे पहले, थर्ड पार्टी वो साथ में ही बना के देता था. अभी वो सीधा जाके क्लाइंट बोल रहा है कि मैं अपना इंश्योरेंस खुद डायरेक्ट ले लूंगा एट 1/3 द प्राइस. आप भूल जाओ, आप गाड़ी दे दो मेरे को. तो इट्स नॉट ओनली अ म्यूचुअल फंड इशू, इट्स माय सबमिशन, इट्स अपना ढांचा ही उसी तरह बना है. राइट योर रॉन्ग, टाइम विल टेल, हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स in that sense. For example, in the US, a client will not get a direct expense ratio unless until he's putting in say 1 million and above. 100 रुपए पर नहीं मिलेगा, इधर मिल रहा है. तो I would just say that, look, to your point, advisors are important. They guide you and they play a very critical role. अपना बिजनेस का ढांचा अलग है. और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ जैसे फिनटेक्स आ रहे हैं, वेल्थ टेक्स आ रहे हैं, अब तो होपफुली हर दबके के लोगों को सर्विस और एग्जीक्यूशन और एडवाइस का चेंज होगा. ये भी No, it's become convenient, right? Convenience I think convenience has just gone to another level in the last 10 years, which was never there in that sense. बिल्कुल. अब सिर्फ वो के शुरू कैसे करें, जैसे आपने कहा, Absolutely. उसके लिए वो हाथ पकड़ने की बस एडवाइस, हाथ पकड़ने की जरूरत है. और स्टार्टिंग में या तो कोई आपको एडवाइस करे कि आप अपना करियर चालू कर रहे हो, अब अगर आप प्लान करो तो इस तरह से दिखेगा, और उनको वो समझाए 20 साल 30 साल का प्लान, और फिर वो लोग फॉलो करे वो, then the outcome will definitely be great in that sense. If you are going to be transactional in nature, that मेरी खासियत ये है कि मैं ये फंड आपको ये टाइम पे सजेस्ट करूंगा और टाइम करूंगा, तो मे बी आई डोंट नो व्हाट योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर. देन इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स मोर अ ट्रांजैक्शन टू से. एंड आई थिंक दैट्स द मैसेज आल्सो फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, हाउ दे वांट टू बिल्ड देयर बिजनेस. उसमें मैं देखता हूँ लंबे करियर में भी 3 या 4 जगहों आपने काम किया. करंट रोल में आप 18 साल से. अपने जब बेटों के साथ आप बैठते हैं, कुछ शेयर करते हैं अपनी जर्नी के बारे में, क्या एडवाइस देते हैं आप उनको? No, it's pretty simple advice, I think. One, work hard, especially in the initial years, because when you don't have other responsibilities, that's the best time to work hard and learn. The second thing is, I think the corporate world will always reward the performers. If your company may not reward you, there will be a line of this thing, provided you're good. So focus on being the best in what you do, and be sincere and work hard towards that. And I also feel that I just tell them that, look, get deep into your subjects. I think depth will matter more and more into whichever business area this thing. Generalist also is an option, but I think if you are a specialist in something, that will take you to another level. That's it. I think these are a few messages which I just keep telling them. And the third, the most important one is humility. I think the markets will make you learn humility.
जो चीज़ आप एक दिन बोलोगे और कल आपको दूसरा दिखाएगा ही कभी ना कभी. Be humble enough to just accept your mistake and move on. There's no right or wrong. You are taking a decision at that point of time based on situation. आगे बढ़िए, गलती से सीखिए. Corporate world आपको reward करेगा. तो this thing, lots of discussions. They have their own ideas. In that sense. हर generation अलग होती है, लेकिन yeah. पैसे का क्या मायना है आपकी जिंदगी में? मायना है. I think it's important because I came from a lower middle class society. I had to secure my family. I had to secure my parents and then my kids in that sense. So I think to reach a particular level, it's important. Once you reach a particular level, then it's your choice what you want to do. ये इनफ क्या हो वो जानना जरूरी होता है. आपके लिए वो इनफ क्या है वो एक जानना जरूरी है. The faster you reach there, the better for you. So it pays off to be a more conservative, more frugal in your initial years. It will pay off disproportionately in the later years. That is one trend I see today's generation, that it's all on the spot, instant. Maybe I'm not of that mindset. The more frugal and the more you can delay, you will get 10x of that in your future. Exactly, that's reverse hai. So I yet basically they will live much longer than us. And they I can see that difference. So hypothetically, company में जब भी जो महीने bonuses release होंगे, and I will yet go and tell each of my staff that home loan पहले भर लो. Reduce the tension of your head. Correct. क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है. पर मैं देखता हूँ कि नई गाड़ी आ जाएगी, नया फ़ोन आ जाएगा या नया but ठीक है, I think they should enjoy it also. So it's their choice and their own this thing. Look, you would rather have the money and then make a statement or not make a statement about it than not having it and this thing for it. So अहमियत है. It's important. And it's important that you reach a particular level where you just become comfortable and secure in that sense. ये जो टाइम आप बचाते हैं इंटरव्यूज ना देकर, उस टाइम को कैसे यूज करते हैं? आजकल लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं. उसमें ये कहा जाता है कि कई चीजें आपको जो नहीं अच्छी लगती उन्हें कट ऑफ करिए. टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही है, चाहे आप सीईओ हो चाहे आप ट्रेनी हो. तो वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते? No, I have my hobbies. I have my passions. Cricket, I think I love it. This thing. Used to play till around say 2 years back. Mumbai boy है तो Mumbai boy है तो yeah, born and brought up. Sachin Tendulkar, same age, same this thing. So big fan. So cricket is a passion. I love all sports. I used to play basketball. So I enjoy playing sports. And then I like researching markets. I'm not only restricted to just equity and debt. I like to research the art market. I have been Bitcoin पे भी किया research आपने? Bitcoin, I'm not. I have very strong views that it doesn't have an underlying, so I will not get into it. Maybe I missed the bus, so be it. But there are various other markets, alternates at play. Real estate. I think I have pretty decent understanding in each of these asset classes. पर आपका डिमीनर इतना cheerful सा है, तो calm सा, music, meditation. No, unfortunately, this thing. No, I'm not a music buff or I'm not saying meditation. No, I need to do that, but not yet. Not yet. बस generally life से संतुष्ट हैं. Absolutely. खुश रहें. ठीक से खाएं पिएं, काम करिए. Absolutely. ये मंत्र आपका. And work hard. Work hard, वही काम से. Work hard, be sincere and work hard. I think
बाकी सब कुछ हो जाता है. It will all happen. I think, look, my limited point to people is that I think your career, which is either your business or your professional life, if you're working somewhere, has to be the core. The minute if your investments start taking more time and you start spending 50% of your time on looking at your investments or NAV, तो गलत है कुछ. Correct. प्रॉब्लम है. एक तो आप गलत चीज में घुस गए हो और आपको रोज का रोज देखना पड़ रहा है ये, और ये आपका नहीं बढ़, आपका करियर, आपका धंधा आपको आगे लेके जाएगा. वो बाद में वो आपको आउटकम, उसका फल मिल जाएगा आपके वेल्थ में, अगर अच्छी तरह से मैनेज. तो 10% ऑफ योर टाइम स्पेंड कीजिए, उससे ज़्यादा स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं है. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सौरभ. थैंक यू वेरी मच. Vivek. सारे गिले शिकवे दूर. थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट. मैंने आपका और एक्स्ट्रा टाइम ले लिया इसीलिए, क्योंकि पता नहीं अगली बार कब बात होगी. एनी टाइम. बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत अच्छा आप इंस्टीट्यूशन एक बिल्ड कर रहे हैं. थैंक यू. और शुरू से जुड़े रहे हैं इस इंडस्ट्री से. मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी भर आप इन्वेस्टर एजुकेशन और इन्वेस्टर भारत के जो सिटीजन्स हैं उनको वेल्दी बनाने का जो आपने मिशन लिया है, आप उसमें सक्सीड हो. Thank you. Thank you very much.